Hello everyone. Today we are going to start chapter Lines and Angle of Class 9th. Before starting this chapter, let us know about the types of angle. So, our first type of angle is acute angle. Acute angle, the angle greater than 0 less than 90 is called acute angle. So here this 30-degree angle is acute angle. This 35 is also acute. 45 is also acute angle and 60 is also acute angle. And you all already know that the angle of 90 degrees is called right angle. Okay, next, obtuse angle. Obtuse angle. So student, 0 to 90 is called acute angle, 90 is called right angle, and the angle greater than 90 but less than 180 is called obtuse angle. So this 120 is obtuse angle. Now moving to next, it's 180-degree angle is called straight angle. Angle of 180 degree is called straight angle. So 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. नेक्स्ट, द एंगल greater than 180 degree but less than 270 degree, the greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. 180 से बड़े और 360 से छोटे वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. लास्ट, angle of 360 degree is called complete angle. So these are the angles. Angle from 0 to 90 is acute angle, 90 to 180 is obtuse angle, angle of 90 degree is right angle, angle of 180 degree is straight angle, and angle greater than 180 but less than 360 is reflex angle. Angle of 360 degree is called complete angle. Now moving to the next slide. On a straight line, this is a straight line. This semicircle is actually 180 degree. आप जब प्रोटेक्टर को रखते हो तो आपने देखा होगा यहाँ 0 से शुरू होता है और ये 180 पे ख़त्म होता है. It means a straight line is always 180 degree. So here alpha plus beta should be 180 degree. So this is called linear pair. Okay, so this is called linear pair. Now next type of angle is adjacent angle. So next type of angle is adjacent angle. So next type of angle is adjacent angle. So adjacent angle. So three conditions we have in adjacent angle actually. I just write over here.
as you can see in the diagram. Just a while. Now let's so when we are talking about the adjacent angle, actually adjacent angle fulfill the three conditions: adjacent, adjacent angle. So our first condition is common vertex. So adjacent angle contain a common vertex. Here this is the common vertex. Second, a common arm, a common arm. So here this is the common arm. This is common arm because why it is called common arm? Because when you read this angle, you know that when you read the alpha, you just read this to ये this one all. So ये जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है, ये आपके ऊपर वाले बीटा एंगल में भी आएगी, क्योंकि आप बीटा को ऐसे करके पढ़ोगे। जैसे अगर बीटा यहाँ पे ए है, ये ओ है, ये बी एंड दिस वन इज सी। सो ये जो आपका ए ओ बी एंगल है ना, ये आपका जो ए ओ बी एंगल है, इस ए ओ बी एंगल में भी आप ओ बी को पढ़ रहे हो एंड बी ओ सी के अंदर भी आप क्या कर रहे हो, ओ बी को पढ़ रहे हो। सो ये क्या होगी आपकी ओ बी, क्या है, कॉमन आर्म. So OB is the common arm and O is the vertex. And now the third condition. So third is non-common arm opposite to common arm. Two non-common arm opposite to common arm. So here the non-common arm is OA. Non-common arm is OA and OC. As you can see that this both arm is opposite to the OB. So for adjacent angle you must have a common vertex, two unknown common arm and one common arm. This is called adjacent angle. Now the next slide. So the lines cutting at a single point is called intersecting lines. So these are the intersecting lines. जो लाइन्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती है, जैसे यहाँ पे काट रही है, सो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. Students, in intersecting lines, these angles, these opposite angle, this one and this one are equal. That means alpha equal to gamma and beta equal to delta. So beta equal to delta. Here this beta is equal to the delta and this gamma is equal to the alpha. So these angle are called, because as you can see it is vertically opposite to each other. Gamma is opposite to alpha and beta is opposite to the
delta. So vertically, these are called vertically opposite, vertically opposite angle. In short form, we write is V dot O dot A. These are called vertically opposite angle. Now moving to the next slide. Okay, I think that all of you know that the lines whose distance always remain same from each other is called parallel lines. So these two lines are parallel lines. Okay, so these lines are parallel lines. We can write it here, parallel lines. My cursor is not moving. I can write it here, parallel lines. Okay, so now let's discuss about the question of exercise 6.1 and that why these chapters are important actually, because from here the actual theoretical portion is starting and each and every student should know that these concepts. So this is the first question of NCERT. So what is here is, the diagram is not clear actually. I'm just writing down here. This is O, this is C, this is E, and this is B, this is D, and this is A. जब भी आपने कभी इन क्वेश्चंस को करना है, थ्योरी के क्वेश्चंस को करना है, वो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट हियर इज गिवन. जो आपने क्वेश्चन शुरू करना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने लिखना है गिवन. अब आपको जो गिवन है आपने सिर्फ वो लिखना है. अब जैसे कि आप देख रहे हो, गिवन क्या है, दैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. कि ए बी और सी डी दो लाइन्स है जो एक दूसरे को ओ पे काटती हैं. गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री. अब कहाँ पे एंगल, अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ये जो सेंटर में अल्फ़ाबेट होता है, इस सेंटर में लेटर है, जो एंगल होता है वो तीनों में से इसके ऊपर बनता है. जैसे ए ओ सी अगर अंडर तो ऐसे बनेगा, ए यहाँ पे ओ यहाँ पे सी, तो ये इस एंगल की बात कर रहे हैं. अगर बी और ई की बात करो तो इस तरह से बी, ये ओ और ये ई, तो ये इस एंगल की बात कर रहा है. इसने क्या बोला कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 70 डिग्री. अब देखो ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, बी ओ ई यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री. तो आपने लिख देना. उसके बाद उसने कहा कि एंगल वी ओ डी इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री. इट मीन्स एंगल ये वाला कितना है, 40 डिग्री है. अब ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से इसको देखें कि यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन, दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो है ये बिल्कुल सीधे से इसको काट रही है. ठीक है. सो अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40. और क्राइटेरिया कौन सा लगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. अब इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना था, 70. The sum of these two angle is 70. It means if this is 40 then this is 30. अब ये जो हमने किया है इसी को हम क्या करेंगे, पहले तो टू प्रूव लिख लीजिए इसका, टू
प्रूफ, ये टू फाइंड, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड, प्रूफ वहाँ करना होता है जहाँ पे हमें कुछ फाइंड मतलब कुछ फाइंड प्रूव करना है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ, we have to find reflex of angle COE. Now student we are talking about the angle BOE, हमें फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले जो हम कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, पहले जो हमने किया है सॉल्यूशन के अंदर, we have to write down in the solution the same what we have done. So in her angle BOD इक्वल टू द एंगल AOC, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखो ये 40, ये BOD, इसको आप DOP भी पढ़ सकते हो, बस ये ध्यान रखना है, यू हैव टू जस्ट टेक दिस O in the center and this is AOC, both are equal because they are vertically opposite angle. Now from equation 1, ठीक है, from equation 1, from इक्वेशन 1 इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका कि जो ये एंगल है इन दोनों का सम AOC और BOC का सम कितना था 70। अब AOC कितना है आपका 40 और एंगल POE इक्वल टू 70। अब ये एंगल BOE, ये 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर प्लस, आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE, व्हाट वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, एंगल COE का हमने रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स होता क्या है, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, अगर आपने COE का, ये दिस वन इज C, ये O है, ये E है, C के रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से COE की वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो। लेकिन हमें COE की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। अब हमें तो इसकी पता है, ये कितना था 40, ये कितना था 30 एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सो हम क्या लिखेंगे, अगर ये सिर्फ 2 एंगल में डिवाइड होता तो हम कहते लीनियर पेयर, बट ये 2 में नहीं है 3 में है। हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि AB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब AOC कितना है 40, COE कितना है 30, BOE आपको फाइंड आउट करना था क्योंकि रिफ्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ COE नहीं है, BOE आपको COE ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका COE, 180 में से अगर आप 70 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 110। अब रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, if you want to find reflex of any angle then just minus it from 360। so 360 में से COE माइनस करेंगे अब, 360 माइनस 110 0 5 और ये 250, so answer is 250। so this is the first question that you have done। now moving into the next slides and this is the second question। so what it have फिर से in each and every question you have to write down the given to find your two जो भी है आपका, and after that solution। so here given the line XY and MN intersect at O, angle POY, ये देखिए this one is P, here is the O and here is the Y, this is A and this is B, this is 90 degree symbol। so here is given that given क्या है A
रेशो बी आपका 2:3 गिवन है, और टू फाइंड क्या करना है आपने, टू फाइंड आपने सी करना है। वेयर इज द सी, एक्चुअली सी इज दिस, ये आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है, दिस वन ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सोल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, so sum of three angles is what, 180 degree. So a plus b plus अब 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब a कितना दे रखा है, 2:3, जब रेशो में दिया होता है तो हम एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। सो a को क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे 90, दैट इज 5x इक्वल टू 90। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45 डिग्री। इफ x इज 45, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 18 डिग्री, एक्चुअली यहाँ पे आंसर आएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है, सो इट इज 18 डिग्री। So here the answer is 18 degree. So what is the value of a here? A is 2x, so 2 into 18. This one is 36 degree and this one is 54 degree. Now but they asked us about the angle C. देखिए, this is a line, this is also a line, it means angle C is equal to this. Okay, so ये जितना एंगल है उतना ही आपका एंगल C है। दिस वन इज 90, दिस वन इज 30, सो ये टोटल कितना हो गया, 126 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ C इज 126 डिग्री। So class, we will discuss the remaining 4 questions in the next session. Thank you so much.